Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Ali Rana from Ghulamane Abbas School. Today in this video lecture we have these S.L.O 16.8.1, 8.2 and 8.3 from our chapter number 16 Introductory Electronics. So आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिक ऑपरेशंस हैं या लॉजिक गेट्स हैं, उन जिन्हें लॉजिक ऑपरेशंस कहते हैं, उन लॉजिक ऑपरेशंस के सिंबल्स स्टडी करेंगे और साथ साथ हम उसके फंक्शन को स्टडी करते हुए दैट हाउ दिस लॉजिक ऑपरेशन वर्क्स, उसी बेसिस पे जब हम इन लॉजिक ऑपरेशंस के ट्रुथ टेबल्स फॉर्म करेंगे. सो सबसे पहले जो हमारे पास हमारा लॉजिक ऑपरेशन है दैट इज नोन एज एंड ऑपरेशन. So this is the symbol for the AND operation जिसमें हमारे पास minimum 2 inputs होते हैं and we can have more than 2 inputs as well and we have only one output of this AND operation. So truth table बनाने से पहले हम इस बात को recall करें जो हमने previous lectures के अंदर भी study की थी कि अगर हमारे पास 2 inputs मौजूद हों so we know that हर input की value it will be either 1 or it will be equal to 0. लॉजिक वेरिएबल्स की जो वैल्यूज हैं वो 1 और 0 ये दो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं. सो अगर हमारे पास दो इनपुट्स मौजूद हैं लॉजिक ऑपरेशन के अंदर, सो हाउ मेनी पॉसिबल स्टेट्स आर देयर फॉर दीज टू लॉजिक वेरिएबल्स. सो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट वी कैन हैव 4 लॉजिक स्टेट विद दीज टू वेरिएबल्स. फॉर एग्जांपल, the values of A and B could be 0 and 0. A variable की भी value 0 and B variable की भी value 0. We can also have the values as 0 and 1. लॉजिक वेरिएबल A की वैल्यू 0 एंड लॉजिक वेरिएबल B की वैल्यू 1. Similarly, we can have these two possible states as well, 1 0 and 1 1. So there are only 4 logic states possible with these two input variable. हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 4 possible state हो सकती है इन दो लॉजिक वेरिएबल्स को यूज करते हुए. एंड लॉजिक स्टेट का मतलब क्या है कि लॉजिक स्टेट मीन्स कि तमाम वेरिएबल्स की जो डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं लॉजिक वेरिएबल्स की, उसे हम लॉजिक स्टेट कहते हैं. सो दिस इज वन लॉजिक स्टेट इन विच वेरिएबल A एंड वेरिएबल B आर 0. दिस इज द सेकंड लॉजिक स्टेट एंड दीज आर थर्ड एंड फोर्थ लॉजिक स्टेट. तो ये हमारे पास जो है वो लॉजिक स्टेट्स आ गई इन दो वेरिएबल्स या इन दो इनपुट्स के साथ. सो लॉजिक ऑपरेशन पे चलने से पहले हम इसका लॉजिक सिंबल देख लेते हैं कि मैथमेटिकली इन दी बूलियन अलजेब्रा हम इस ऑपरेशन को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. So this is the mathematical representation of this AND operation in which we put a single full stop or single dot between two variables that represents the AND operation between them. अगर हम दो वेरिएबल्स के बीच में एक डॉट लगा रहे हैं, so this dot means there is an AND operation between variable A and the logic variable B, whereas the X is the logical output of the AND operation between A and B. So हम उसको रीड किस तरह से करेंगे? This is the A and B. So this dot means AND operation. So अब हम आते हैं कि लॉजिक ऑपरेशन वर्क किस तरह से करता है. सो दिस AND ऑपरेशन मींस कि अगर इस लॉजिक ऑपरेशन में जितने भी वेरिएबल्स मौजूद हैं, तमाम वेरिएबल्स के इनपुट वैल्यूज अगर 1 होगी तब ही हमारे पास जो आउटपुट है वो 1 आता है. इफ any of the input is 0, then the output of the AND operation is also 0. किसी भी लॉजिक वेरिएबल्स की वैल्यू अगर 0 होगी तो हमारे पास आउटपुट 0 आएगा. इन शॉर्ट, अगर हमारे पास AND ऑपरेशन के अंदर आउटपुट 1 आ रहा है, दिस मीन्स दैट ऑल द input values of the logic variables are 1. So this is the truth table of all the possible logic states of the input variables and their corresponding outputs. We have both the variable 0, the output is 0. We have 1
variable is 0, we have output 0, and we have one variable 0, then output is also 0, and we have all the inputs are 1, then the output of this AND operation is 1. So our next logic operation is OR operation. This is the circuit symbol for the OR operation, and we can have two or more than two inputs for this OR operation, and we can have only and only one output for this operation. And as we know that we have two input variables, so it's mean we can have only 4 logic states of this OR operation. So ये हमारे पास 4 logic states आ गए, in which first state is both the variables are 0, second and third logic state is either of the input is 1, and the last logic state in which all the logic inputs are 1. अगर हम इसकी mathematical symbols की बात करें, so we represent the AND OR operation with positive sign. So A plus B means there is OR operation between the logic inputs A and B. So this sign represents the OR operation in the Boolean algebra. So this A plus B, we can read this statement as A or B. So this sign represents the OR operation. तो ये हमारे पास लॉजिक स्टेट्स आ गई इस और ऑपरेशन के लिए, ये हमने यहाँ सिंबल मेंशन कर दिया. एंड एज वी नो दैट वी कैन हैव टू or more than 2 logic inputs and we can have only and only one output. So अगर इसके operation की बात करें कि how this operator works or the function of this operator, so this OR operation works when all the inputs are 0, the output of this OR operation will be 0. Otherwise it will be equal to 1. अगर हमारे पास तमाम logic inputs की value 0 है तो हमारे पास OR का जो आउटपुट है वो हमेशा 0 आता है. अगर तमाम इनपुट्स में से किसी एक इनपुट में भी हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू 1 है, बाकी चाहे 0 हो, अगर एक भी इनपुट की वैल्यू 1 है तो हमारा जो आउटपुट है वो 1 आता है. So this is the truth table of our OR operation, जिसमें फर्स्ट स्टेट में तमाम लॉजिक वेरिएबल्स की वैल्यू 0 थी, so our output is 0. बाकी तीनों स्टेट्स में अगर हम देखें तो सेकंड स्टेट में देयर इज वन इनपुट एज इक्वल टू 1. सेकंड अगर थर्ड लॉजिक स्टेट में देखें तो वैल्यू ऑफ ए इज 1, एंड अगर हम लास्ट स्टेट के अंदर देखें तो ऑल द वेरिएबल्स आर 1. सो द आउटपुट्स आर 0 1 1 एंड 1. दिस इज 0 बिकॉज ऑल द इनपुट्स आर 0. कोई एक भी इनपुट वैल्यूज अगर 1 के बराबर होगी तो हमारा जो और ऑपरेशन का आउटपुट है वो हमेशा 1 आता है. So the next operation we have is NOT operation, that is known as inverter. ये हमारे पास next operation है जिसे हम NOT operation कहते हैं, और साथ साथ this operation is also known as inverter, and this is the circuit symbol of this NOT operation. So as we can see that we have only and only one input in this inverter or NOT operation, और साथ साथ output as we know that हमारे पास output हमेशा 1 होता है. अगर इसके हम मैथमेटिकल सिंबल की बात करें, सो वी पुट अ स्ट्रेट बार ऑन दैट वेरिएबल्स दैट हैज टू बी इन्वर्टेड. जिस वेरिएबल के ऊपर नॉट ऑपरेशन अप्लाई किया जा रहा है उस वेरिएबल के ऊपर हम जो है वो इस तरह से एक बार प्लेस कर देंगे. दिस बार रिप्रेजेंट्स दैट दिस इज द नॉट ऑपरेशन और दिस वेरिएबल हैज टू बी इन्वर्टेड. एंड एज वी नो दैट इफ वी हैव only one logic variable or one logic input, so we can only have two possible states for that logic operation. एक input के साथ हमारे पास सिर्फ 2 logic states possible होती हैं, that is 0 and that is 1. सिर्फ ये 2 possible states हैं. And for the function of this inverter, as its name suggests, this is also known as inverter. So what this NOT operation perform is that it inverts the input whatever it's get. So जो भी इनपुट इसको दिया जाएगा ये वो ऑपरेशन जो है वो उस इनपुट को जो है वो इन्वर्ट कर देगा. So for example we have input of a 0, so it will invert as 1 and 1 is to
0। हमारे पास लॉजिक स्टेट 0 थी, लॉजिक वेरिएबल 0 थी वैल्यू, देन आउटपुट विल बी 1, और अगर इनपुट वैल्यू 1 होगी सो आउटपुट विल बी 0। So the next operation or logic gate we have is a NAND operation or NAND logic gate. As its name suggests, it has two logic operation involved. One is the NOT operation and the other is the AND operation. So we have two logic operation in this logic gate. हमारे पास दो logic operation मौजूद है, one is and the other is NOT. So ये हमारे पास symbol होता है, जैसे हमने यहाँ AND के लिए symbol बनाया था, we put a small circle or small bubble at the head of this symbol. This represent the NAND operation. और बाकी तमाम लॉजिक ऑपरेशंस की तरह इस NAND ऑपरेशन में भी we have minimum 2 logic inputs and we can also have more than 2 logic inputs, but we have only and only one output. अगर हम इसके मैथमेटिकल सिंबल की बात करें, so mathematically we represent this as A dot B and whole bar. So this dot means the AND operation and this bar means the NOT operation. So this NAND is the combination of two operation and NOT. So we have this NAND operation with two logic inputs, so we can have 4 logic possible states. So what are those possible states? That are 0 0, 1 0 1, 1 0 and 1 1. So ये हमारे पास तमाम possible states हैं. अब इसके function की बात करें, so it works as the inverter of this AND operation. अगर हम इस AND operation को recall करें, so this AND operation states that all the inputs are 1, then the output will be 1. Otherwise तमाम output जो है वो 0 होंगे. So ये जो ऑपरेशन है, ये जो लॉजिक गेट है, बिल्कुल इसका रिवर्स जैसे इन्वर्ट होके परफॉर्म करता है. सो अगर हम इसके आउटपुट को देखें कि इसका आउटपुट 1 कब आता है, व्हेन ऑल द इनपुट्स आर 1, द आउटपुट विल बी 1. सिमिलरली व्हेन ऑल द इनपुट्स आर 1, the output is 0, otherwise all the inputs are 1. So this is the truth table for this AND NAND operation. दोबारा से इसके फंक्शन को मैं रिकॉल कर दूं कि AND ऑपरेशन में हमने कहा था when all the inputs are 1, output is 1. So in this case when all the inputs are 1, the output will be 0. अगर एक भी इनपुट 0 होगा तो हमारे पास आउटपुट इसका 1 आएगा. So this NAND operation works exactly opposite or exactly inversion of this AND operation. So the next logic gate we have is a NOR operation. As its name suggests, we have the two logic operation involved in this logic gate. We have OR operation and we have NOT operation. हमारे पास दो logic operation मौजूद है इस logic gate के अंदर. One is the NOT operation and the other is the OR operation. And तमाम logic gate operations की तरह, logic gates की तरह, we can have at least 2 inputs and we can have more than 2 logic inputs, and we have only one logic output for this logic gate. So अगर हम दो inputs के साथ लॉजिक स्टेट्स फॉर्म करें, तो जैसे हमने तमाम लॉजिक ऑपरेशंस के साथ किया, वी हैव टोटल ऑफ 4 लॉजिक स्टेट्स पॉसिबल फॉर दीज 2 वेरिएबल्स. सो ये हमने यहाँ पे सिंबल फॉर्म कर दिया. दिस इज द सिंबल ऑफ द OR ऑपरेशन एंड वी हैव पुट अ स्मॉल सर्कल्स ऑन द हेड ऑफ द सिंबल दैट रिप्रेजेंट द इन्वर्टर. सो इसके मैथमेटिकल सिंबल की बात करें तो मैथमेटिकली इट इज रिप्रेजेंटेड एज A plus B and whole bar. So this positive signs represent the OR operation and this bar on this whole represent the NOT operation. So we have the 4 possible states. अब हम देखते हैं कि किस तरह से परफॉर्म करता है. अगर हम अपने OR ऑपरेशन को रिकॉल करें, so when all the inputs are 0, the output is 0. So in this case, in the NOR logic gate, we have the inversion of this OR operation. हमारे पास ये 0 आता है आउटपुट में जब तमाम लॉजिक इनपुट जो है वो 0. So in the case of NOR operation, when all the inputs are 0, output will be not 0 but it the inversion of the 0. So अगर हमारे पास तमाम लॉजिक इनपुट 0 होंगे तो हमारे पास आउटपुट 1 आएगा, otherwise all the inputs are
0। सो ये था हमारा लास्ट लॉजिक ऑपरेशन नॉर का लॉजिक गेट था, जिसमें हमने जो है वो नॉर का इन्वर्जन किया। तमाम इनपुट 0 थे तो आउटपुट 0 था, तो यहाँ पे तमाम इनपुट 0 है तो आउटपुट विल बी 1। बाकी तमाम केसेस में आउटपुट 1 था, सो यहाँ बाकी तमाम केसेस में आउटपुट 0 आ रहा है। तो यहाँ तक हमने लॉजिक ऑपरेशन और लॉजिक गेट्स को आइडेंटिफाई किया विद द हेल्प ऑफ दी सिंबल्स। हमने उन लॉजिक ऑपरेशंस और लॉजिक गेट्स के मैथमेटिकल सिंबल्स देखे, दैट दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव साइन एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्मॉल बार ऑन अबव द लॉजिक वेरिएबल। इसी तरह से हमने तमाम लॉजिक गेट्स और लॉजिक ऑपरेशन के लिए ट्रुथ टेबल फॉर्म किए, जिसके अंदर हमारे पास तमाम लॉजिक पॉसिबल लॉजिक स्टेट्स एंड उनके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट्स शामिल थे। अब हम देखते हैं इन लॉजिक ऑपरेशंस और इन लॉजिक गेट्स के डेली लाइफ में कहां पर यूज होता है। सो ये देखे सबने लॉजिक गेट के यूजेस के, लॉजिक गेट्स या लॉजिक ऑपरेशंस हमारी डेली लाइफ में कहां पर यूज हो रहा होता है। सो हियर वी कम एट द एंड ऑफ अ क्लास, जिसमें हमने एसएलओस के अंदर डिफरेंट लॉजिक ऑपरेशंस और लॉजिक गेट्स को स्टडी किया विद द हेल्प ऑफ देयर सिंबल्स, देयर मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन एंड देयर ट्रुथ टेबल। और साथ साथ फाइनली हमने कुछ सिंपल से यूजेस डिस्क्राइब किए जो कि डेली लाइफ में इन ऑपरेशन और इन लॉजिक गेट्स को हम यूज करते हैं। So this is it for today's class. Inshallah, I will see you in the next video lecture with some other topic from this chapter, electronics. Till then, this is Muhammad Ali Rana taking off from this class. Allah Hafiz. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to